ना देखो एग्जाम रो रीशेड्यूल कथा भाबनी एग्जाम जदि रीशेड्यूल हबो समस्त पई हबो आ जदि भी सपोज कहार ओवरलैप होउछ कारण यूपीएससी रे तो ओडिसा रो लिमिटेड पिला क्वालिफाई करछन जेथि पुनी बहुत पिला दउ नहंती तेणु जी ओपीएससी दउन तांकर डेट संगे ओवरलैप हे किछ फायदा जदि भी कहार धर सपोज जने जनकर ओवरलैप होउची सेही डेट टा केवल चेंज हबो सपोज 3 तारिख टा मे भी चेंज करी से 5 तारिख करि परिबे किबा 28 तारिख रे कार होउची मे भी सेटा आउडे दिन को से शेड्यूल करि परिबे किंतु पूरा हमरो एग्जाम रीशेड्यूल हबार वेरी लेस चांस बी प्रिपेयर फॉर हमरो 25 तारिख को भाबी के हमें पाठ पढिबो ओके सो अनदर 19 days to go तो काउंटडाउन स्टार्ट करो जे 19 18 17 एमिति स्टार्ट करो ओके सो क्वेश्चन थिला हमरा you are working as an executive in a nationalized bank for several years one day one of your close colleague tells you that her father is suffering from heart disease and needs surgery immediately to survive. She tells you that she has no insurance and the operation cost will be around 10 lakh. You are also aware of the fact that her husband is no more and she is from the lower middle class family. You are empathetic about her situation. However, apart from expressing your sympathy, you don't have the resource to fund her. A few weeks later, you ask her about the well-being of her father, and she informs you about his successful surgery and that he is recovering. She then confides in you that the bank manager was kind enough to facilitate the release of 10 lakh from a dormant account of someone uh, someone to pay the operation with a promise that it should be confidential and repaid in the earliest. She has already started paying it back and will continue to do until it is all returned. So what are the ethical issues involved? Evaluate the behavior of the bank manager from an ethical point of view and how will you react the situation. Tinta question. The question बुझी पारलो जे तमे गोटे नेशनल बैंक रे ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव हिसाब रे काम करूछ तमर जने क्लोज कलीग ताଙ୍କ बापा हमर हार्ट डिजीज रू हार्ट डिजीज सफरिंग आउ तांकर इमीडिएट सर्जरी होवा दरकार आउ जोथरे कि 10 लाख खर्च होबो आउ जे तमर कलीग जे तांकर हस्बैंड भी नाहंती जने लोअर मिडिल क्लास बिलोंग करूछंती तेनु तमे तांको सिंपैथी देखेले एम्पैथी किनु तम पाखे पैसा नै तांको हेल्प करिया पे तो किसी दिन गला आउ तापरे से तुम पचारे तुम बापा केमती अच्छे सी कहले जे नहीं सक्सेसफुल सर्जरी है आउ सी बर्तमान धीरे धीरे रिकवरी कर तो पैसा कौटू आनिल तो बैंक से कहले कि बैंक मैनेजर ऑलरेडी मते 10 लाख रुपीस हेल्प करी फ्रॉम ए डॉर्मेंट अकाउंट प्रॉमिस करछन जे कथा काहू न कहया पे मु धीरे धीरे करके सुझी देबी आ सुझीबा स्टार्ट कले तो एथिरे व्हाट आर द एथिकल इश्यू इन्वॉल्व evaluate the behavior of the bank manager as a from an ethical point of view. Now, how will you react to the situation? कौन हवा कहार कौन लगुची जहाँ भी ठीक लगुची माने आगो आमी तो देखिबा आंसर कौन आमे एथे रहिबो ए क्वेश्चन जणे जदी बिल्कुल माने किछि एथिक्स रे किछि ई अक्षर जानि नै एथिक्स रो जदी किछि ई अक्षर भी जानि नाहंदी तो कौन तमु लागुची तमे जदी भाबिबो जणे एज ए ह्यूमन भाबिबो तो कौन भाबिबो कौन भाबिबो ओके misuse ହେଇଛି misuse of authority breach of confidential okay transparency nahi okay no this is not revision class okay professional versus personal breaking the guideline okay guideline ethical responsibilities
ओके तो देख फास्ट कथा हूँ जे तुम जदि भाबिबो जे नहीं गरीब लोकटे तो पैसा नहीं कौन करवा ठीक अच्छे पैसा मुझे देदेवी कौन कौन इश्यू तो एक तो तांकर जो सिंपाथी सिंपाथी ये एंगल रु सी हमरो पर्सनल कैपेसिटी हेल्प करछंती गोटे दृष्टि से देखिया जे गोटे ह्यूमैनिटी ग्राउंड रु हमरो और जो हेल्प करिसंती कि तुम जदि देखिबो लोक मैंने कहीं पैसा थोउछंती गोटे डरमाट अकाउंट रे जोथे लास्ट 1 ईयर रे तमे भाबिले तो पैसा उठौ नांती कि नौ नांती तो पड़ी के अछि एथरे पैसा उठेक दे देबी तो टाइम भी से पुणी आउ थरे पैसा आनी कि थोई देबे तो काम को काम हे जिवो आउडा किंतु एटा गोटे अनएथिकल इश्यू जदि जणे बैंक को हमें पैसा थोउचे थ्रो द हमें ट्रस्ट को नै कि जदि एटा जदि पर धरा पड़िला ताहले बैंक रो रेपुटेशन पूरा खराब हो ना नै तेणु लोक मैंने से जो भरोसा जे हमर पैसाटा मिस यूटिलाइज हबनी तो सेटा हमर कोन होची ना से ट्रस्ट ऑन द बैंक विल बी इरोड ना नहीं तार हेटा हमर धीरे धीरे से भरोसाटा हमर उठी जिवो ओके जोटा कि रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो डाउन होची तो तमर पर्सनल पावर आउ कैपेसिटी की मिस यूटिलाइज कलम तमर प्रोफेशनल ग्राउंड रे यू आर डूइंग समथिंग अनप्रोफेशनल तो एटा होची भूल हेची तमे जाने ओके तो सेकंड हमर थिला जे तमे कोन करबो तमे बे जानिलो जे मो मैनेजर एमती करिछि आउ तमर कोन व्यू रहबा कथा ओके तो कोन करबा थिबा ह्यूमन आमे देखि जे हां से ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू रे देइछंती जेहेतु बैंक रो जने क्लोज कली गरीब लोक तो ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू रु से देइछंती तो तमे कोन करबो तांको नारे किछि तमे एक्शन नबो ना नबो तमु कोन लागछ देखो तमर भी एज ए क्लोज फ्रेंड हिसाब रे मे बी तमें देखिबो जे इट शुड नॉट बी हमर मिस यूटिलाइज होबा कथा नहे एवरीवन शुड adhere टू द पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बैंक रो जहां भी रूल्स रेगुलेशन अछि सेटा मे नॉट बी तमे कोनोसी तांको नारे एक्शन आनिबोनी बट इट शुड नॉट बी माने फ्यूचर जेमदी न हुए सेटा हमें तमे देखिबो जे इट शुड नॉट बी हैपन किंतु बोर्ड रो आना जीवो जे ए जो अनप्रोफेशनल वे रे हेची नो वन शुड रिपीट दैट वन सेटा तमे कोन करियो समस्त को नोटिस को आनिबा निहाती दरकार सेकंड कथा हला जे हमें मे नॉट बी टेक सीरियस एक्शन से माने को अगेंस्ट रे आनोनी प्रेसिंग चार्ज किछि किंतु तमे देखिबो जे केमिति मनीटा क्विक रिकवर हबो एज वेल एज दिस शुड नॉट बी रिपीट अगेन ना नहीं आउ गोटे कौन कहि परिबो जे काहे के भले सिचुएशन होची जो माने बैंक रे सपोज काम करू छंती तमे गोटे मेडिकल इमरजेंसी फंड कर दियो जहार दरकार इमीडिएटली से कौन करिवो जो सेही फंड जो इमरजेंसी फंड रो पैसा नबो आ पुनी आनी कि गोटे टाइम लिमिट दिया जबे ती दिन सो दैट कि हमें कौन करिबा ना जो एम्प्लॉय माने अछंती से मानकर भी तांकर केमिति केयर निया जीवो सेटा भी तमे कहि परिबो किंबा तमे कहि परिबो जे ना हमरो समस्त पई हमरो जेमिति कि प्रति हेल्थ इंश्योरेंस अछि तो से बडा हेल्थ इंश्योरेंस भी किछि फैसिलिटीज रखो ओके तो ये भला सिचुएशन तमे कहि परिबो माने गोटे तमे बिल्कुल एथिक्स पढी न तमे एतिक त भाबी ओके हाँ पीएम आयुष्मान भारत योजना रे यूटिलाइज जदि मु कहली ना मिडिल क्लास फैमिली तमरो आयुष्मान भारत योजना तमे आसुनो बैंक रे चाकरी करिछ मिडिल क्लास फैमिली जोथरे कि आयुष्मान भारत थिले तो से यूटिलाइज कर देथन आ काहे के भले एते धंदा को जेथन ओके तो आई सब जिनसोडा तमे कहि परिबो ओके सो नाउ कमिंग टू द जो हमें देखिबा आर केमती कोन वे केमती करिबा तो एथरे स्टेक होल्डर को माने रहिले स्टेक होल्डर तमे कहि परिबो जे हमरो एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशनल बैंक रहिला बैंक इटसेल्फ रहिला जे कलीग जहां का फादर कर ए भलिया सिचुएशन हेछि बैंक मैनेजर आउ फादर ऑफ द कलीग ए माने रहिले स्टेक होल्डर एथिकल इश्यू कोन ना ट्रांसपेरेंसी इश्यू रहउछि ना नहीं in this situation bank manager as well as the colleague are not transparent about their action secretly कामटा हेछि सेकंड होछि
accountability issue hochi, the bank manager does not seem to be accountable to the higher authority as well as to rules and regulation of the bank. The rules and regulation of the bank ku violation kariki sei bhala steps nei chanti. So bank manager has flouted obligation of his position to misutilize karichen ta position lo. Integrity and probity. Bank manager and colleague are not showing integrity and probity towards the organization or bank. It directed towards keeping self-interest over organization interest. The organization interest को पछरे पक्के कि माने self-interest को आगे देचन. Okay, so they don't have so the integrity and the probity towards the organization. Okay, the integrity of probity ro problem. Empathy. How can ethical issue? The executive and the bank manager has shown empathy towards the colleague. Compassion. Showing compassion, bank manager has shown compassion, giving a large sum of money through unauthorized means. Okay, compassion, showing compassion, a heavy amount. Objectivity. Making decision with objectivity means relying on the data and statistics rather than one's own bias or opinion. Here, the bank manager action can seen as right or wrong regardless the consequence. हमें देखिबा कौन कौन हमरा इथरे रहिबा दरकार. फर्स्ट कथा हला हमें सेकंड क्वेश्चन थिला जे हमें कौन करिवो evaluate the behavior of the bank manager from ethical point of view. Okay, तो behavior कौन रहउची. एक रे से दयालु भाव देखै छथि, benevolence. The act of manager can be seen as an act of benevolence. तो तांकर काइंडनेस देखै छथि से इथरे. Okay, हाँ ठीक अच्छे दया तो देखे किंतु भूल भी करी unjust act. Okay, behavior of the manager has done injustice to the dormant account holder against his or her will or without getting informed. कहा को न जाने कि से जो लोको अकाउंट रखी भी से भी जानी नहीं. So dormant account. So behavior of the माने manager has done injustice to the account holder also. जन को पचारी कि तार से account transaction करूनी बोली से थ्रू unauthorized way रे तमे withdraw करिक जदी यूटिलाइज करिवो तो this is just an माने कोन rules और regulation of violations. This is unjust act. Misuse of authority. In this situation there has been clearly the misuse of authority by the bank manager. Okay, ends justifying the mean. हाँ ठीक अच्छे जहाँ भी भूल वे रे हेची किंतु कौन होची ना फादर कर सक्सेसफुली कौन हला ना कॉलिंग का फादर कर सक्सेसफुली सर्जरी डन हेची. Okay, so which shows that though the means are wrong, it ends are justified. Okay, against the rule. So behavior of the bank manager is against the rules and regulation of the organization. Okay, so these are the behavior of the तेणु तांकर पॉजिटिव नेगेटिव सब तमे लिस्टेड कलो. ओके, काइंडनेस गोटे हमें देखिले किंतु आउ सब अनजस्ट एक्ट ला मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड जस्टिफाई द मीन देखिलो अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन. तेणु तमर कोन रिएक्शन रहिबो तमे जेतले जानिलो तम संगठो जे एई भलिया घटना हेची तेणु तमर कोन रोल्स रेस्पोंसिबिलिटीज रहिबो. ओके, so तमर कोन रोल्स रेस्पोंसिबिलिटीज रहिबा हमें कहले एडवोकेसी फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. आज जेहेतु तुम गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो मेंबर यू शुड गिव द प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी दबो. ओके, तेणु कौन तुम प्रायोरिटी रहिबो ना एज एन एग्जीक्यूटिव आई वुड एम्फासिस द इंपोर्टेंस ऑफ स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेजर इन द बैंक्स बोर्ड मीटिंग. The bank's reputation hinges on the maintaining the trust of its customer or shareholder. तो लोक माने भरोसा करी कि पैसा रखुचंदी आ तमे जदी तार मिस यूटिलाइज करबो लोक माने पैसा जदी न थई त बैंक तो बुडी जिवो. ओके, तो सेति पे बैंक्स रेपुटेशन इज डिपेंडिंग ऑन द स्टाफ्स जो माने को ऊपर भरोसा रखी कि कस्टमर और स्टेक होल्डर माने से माने इन्वेस्टमेंट करूचंदी और पैसा रखुचंदी कि व्हाटएवर मे बी. So any deviation from the established protocol can erode the trust. The trust भरोसा माने भांगी बारे बहुत चांस अछि. Discourage secrecy. एमती माने लुचा छपा करी कि पैसा दे दवाटा ठीक नै. Discourage
the secrecy. I would propose a clear policy that disallow the secretive authorization of the fund to the employees irrespective of their position in the hierarchy. जेडे बड़ा position ने थांतु, they should not ए भलिया मिसयूटिलाइज करिवेनी तांकर authority रो. Okay, so irrespective of their position, so disallow the secretive authorization of the fund to the employee. So this ensure a fair and consistent approach to the financial matter within the institution. Employee health insurance, तेणु जेहेतु बड़ बड़ कॉर्पोरेट किंबा बैंक रे भी एम्प्लॉय मानकर हेल्थ इंश्योरेंस निहाती रहबा दरकार. जदि नहीं ताहले एडवोकेट you should give the suggestion to provide health insurance to all the people. से मानकर पैसा काट किसी पैसा काटी कि बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन भी सेमती हुए तो कॉर्पोरेट रे तमे मिनिमम 15,000 दबो माने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करूछन 3 लाख 4 लाख रो. तो सिमिलरली एठी भी करो. सो रिकॉग्नाइजिंग द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द हेल्थ क्राइसिस, I would push for introduction of health insurance account sponsored by the bank for all employee and their immediate families. So this is not only act as a safeguard for the employee, but also reduce the chance of financial improprieties due to personal emergency. ये personal emergency case रे तांको health insurance काम करिवो. Okay. तापरे compassionate accountability. While action of the colleague and the manager are driven, माने से मैंने पूरा निहाती पैसा दरकार थिला desperation ने से मैंने पैसा उठे करी छंती. It is crucial to hold them account. However, keeping in mind their intent and the unique circumstances, ये भला situation से मैंने गोटे एमती नहीं कि corruption नहीं गोटे emergency situation को handle करिया पे करी छंती. तो तांको against एमती किसी legal charge नहीं case face कराने तांगे. You should reframe yourself facing legal charge, opting instead of internal measure to ensure repayment and prevent तो बैंक भितर कमिटी बसई कि तो तार केमती प्रॉपर रिकवरी करा जिबो आ ओइ भलिया फ्यूचर केमती न हबो ता पय तमे स्टेप्स नबो. मेडिकल इमरजेंसी फंड गोटे फंड करि दियो. ए माने कोन किसी भी असुविधा हेले तमे कोन करिवो ना सेथरु तमेंती कोविड रे हमरो प्राइम मिनिस्टर को गोटे फंड हेतला तो कोविड रा सिचुएशन को हैंडल करिया पे सेटु फंड जाउतला. सिमिलरली गोटे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट, you should advocate for establishment of a medical emergency fund for all employees. So such fund should be accessed in the dire circumstances, ensuring employee does not resort to potential unethical means to address personal crisis. The objective of the bank manager to help the colleague has done in a good way. However, against transparency and accountability. Okay. However, it would have been better if such action are followed according to the rules and regulation of the organization. Jodi rules and regulation ठीक अच्छी good intention रे करा जायछि, but against the transparency and accountability जदि proper rules and regulation through रे करा जायथांदा better हिता. Okay, बुझि पला ना बुझि पलानी कार किछि डाउट अछि एथिरे? Okay, now coming to the second topic को हमें डिस्कशन करियो. हां कहार कोन डाउट अछि सर? एक क्वेश्चन उपरे. हां सर नमस्कार. हां को हेलो सर, एडर हमें कहि कारण एक्सपोज करते तो पहले जे एमि हे नाम एमि करने ताला हम वॉइस ब्रेक होछि. क्लियरली आसुनी तम वॉइस अंशुमान तम वॉइस टा क्लियरली आसुनी. ओके तमरो वॉइस टा टिके ब्रेक. ओके हां सर से लेडी तो हमको कहि चंदी किंतु सिमति जे ग्यारेंटी नै से तळेली राजी हेबे जे हम कहिछि बा एमिति हेछि एक्चुअली ताले हमें किमिति ऑथेंटिकली हमें पब्लिकली एक्सपोज करि परिया मैनेजर को जे तमे ऑलरेडी से अकाउंट रु पैसा जाइछि ना नै अकाउंट तो चेक करि परिबो ना. तमे तो इन्वेस्टिगेशन करि परिबो जे से अकाउंट रु रियली पैसा से अकाउंट को दिया हेछि ना नै. ओके तो सेड तो हां काजल स्टेक होल्डर नाम मेंशन नहीं जो तुम बकरे देखिबो जति एटे केते चारिटा वर्ड ही लिखा है. जदि स्टेक होल्डर लिखिबो इट्स ओके. स्टेक होल्डर लिखि कि हमें कोन करि परिबो
केते एति चारिटा वर्ड टेक ओवर इन्वॉल्व यदि लेखि करिवो ओके ओके नाउ कमिंग टू द सर सेकंड क्वेश्चन आंसर हमर लिखला थिला हेलो हां को सर हां को सर आंसर लिखला बेले आगुर स्टेक होल्डर गोटा लिखिया पड़िबो कि नहीं मेंशन नहीं तमे यदि लिखिबो बेटर न लिखले भी चलिबो एमती किछि माने हा जो यदि लिखि देन व्हाट द माने स्टेक जेमति होल्डर गोटे इन्वॉल्व सिचुएशन एमती आसिला ए सिचुएशन रे हां तमे तमे गोटे सिचुएशन अलग को जो एक्सप्लेन स्टार्टिंग करिया इंट्रोडक्शन हां इंट्रोडक्शन जे एई माने अछंती एई भलिया सिचुएशन हेछि कोन करियो तापरे तमरा आंसर स्टार्ट अच्छा तो दिस इज इंट्रोडक्शन टाइप ओके ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि हमरा पडितला से मॉक टेस्ट 24 रे पडितला a landslide occurred in the middle of the night on 20th July 2023 in a remote mountain hamlet approximately 60 km from the Uttarkasi. Okay, तो गोटे लैंडस्लाइड हेछि उत्तरकाशी रे 20 जुलाई रे 60 km from Uttarkasi. The landslide was caused by heavy rainfall and has resulted in large destruction of the property and life. तो लैंडस्लाइड जो हेवी प्रॉपर्टी लाइफ ए भलिया डिस्ट्रक्शन हेछि ड्यू टू हेवी रेन सो तमे सेठी कोन अछ ना यू एज ए डिस्ट्रिक्ट magistrate of that area तमे डीएम अछ कलेक्टर अछ you have rushed to the spot with the team of the डॉक्टर माने कोनी गोटे टीम ऑफ डॉक्टर तम संगे जाइछन्ती एनजीओ मीडिया पुलिस along with numerous support staff to oversee the rescue operation तमे रेस्क्यू ऑपरेशन देखिया को जाइछो suddenly a man came running to you with a request for urgent medical help for his pregnant wife who is in labor and losing blood तो suddenly जने माने मैन सडनली आसला तम पखु एंड रिक्वेस्ट फॉर मेडिकल हेल्प जेहेतु तांको प्रेग्नेंट वाइफ इन लेबर एंड कंटीन्यूअसली लूजिंग ब्लड सेही समय रे तमे यू डायरेक्टेड योर मेडिकल टीम टू एग्जामिन हिज वाइफ examine kala pare they in return convey you that the woman need blood transfusion immediately जे निहाती blood transfusion रहिवा करिया दरकार often inquiry you came to know that few blood collection bag and blood group kit test are available in the ambulance accompanying in your team तमे जो टीम नै कि जाइछो ambulance नै कि जाइछो सेथिरे किछि blood collection bag अछि and किछि blood group test kit भी अच्छी few people of your team have already volunteered to donate blood दबा को भी राजी अछन being a physician who has graduated from AIMS तमे जने डॉक्टर भी ऑलरेडी AIMS रु पास करिसो किंतु तमे एज ए जो डिस्ट्रिक्ट माने यूपीएससी देला परे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हिसाब रे जॉइन करिसो you know that blood for transfusion need to be procured only through a recognized blood bank. Your team members are divided on this issue. Some favor transfusion while other oppose it. किसी कहले नहीं किसी प्रॉब्लम है पारे ओके एमती तो बिना टेस्ट करी कि कहा दे रे एमती ब्लड ट्रांसफ्यूजन करबा कथा नहीं ओके किंतु सिचुएशन क्रिटिकल तमे भी जने डॉक्टर एम्स रु पास आउट द डॉक्टर इन द टीम आर रेडी टू फैसिलिटेट द डिलीवरी provided they are not penalized for transfusion डॉक्टर भी राजी अछंदी जे टू डिलीवरी पई किंतु से तांको कहया कथा जे हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करिवु जदी पर किछि हेगला हमकु किछि दोष न दिया जाऊ नाउ यू आर इन ए डायलेमा योर प्रोफेशनल ट्रेनिंग emphasis on prioritizing service to the humanity and saving the life of individual. What are the ethical issues involved in the case? Evaluate the option available to you being a district. तो कौन? सर ये तो बुझिला सिचुएशन रे आज ए डीएम बेस्ट पॉसिबल आगो कुह कौन असुविधा माने गोटे नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू रो भाबो ओके सर फेल सिचुएशन
field situation ରେ as a district magistrate ଯେତେବେଳେ field situation ରେ ଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ on site management କରିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ already ଗୋଟେ medical professional ମାନେ medical officer ଆଉ as a manager ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେ situation ରେ ତାଙ୍କୁ rescue କରିକି ଆଣିକି ମାନେ ଯୋଉ city area କୁ ଆଣିବା ବି may be ମୁସ୍କିଲ ସେଠୁ on site management ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ତ ସେଠି best possible solution ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହେଇପାରିବ କି ସେ patient ଆଉ patient ର relative consent ନେବେ before transfusing blood ଏଇଟା ମାନେ କଣ କି ନା ଯେହେତୁ legally ରାସ୍ତା ଏଇଟା ହଉଛି କି ସେମାନେ ଗୋଟେ authorized blood bank ରୁ ତ ସବୁ ଯୋଉ ମାନେ କିଛିଟା ପ୍ରୋସିଜର ଥାଏ କି 7-8ଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବ୍ଲଡ ଟା ଭ୍ୟାଲିଡ ରୁହେ ତାର ଯୋଉ ବି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଟା ରେଡି ଫର ଇଏ ଥାଏ ସବମିଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ପ୍ରୋସିଜର ଏବେ ହବା ମୁସ୍କିଲ ତ ଏ କେସ ରେ ଆଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ରିଲେଟିଭ ଯୋଉମାନଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ନବା କଥା ନେଇକିରି ସେମାନେ କ୍ୟାରି ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ओके ठीक अच्छे देख ना तुम प्रथम भाविले गोटे नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू भाविले कौन हम ना दीटा जिनस जे तमे जेहेतु जड़े डॉक्टर गोटे पेसेंट रो जीवन बंचेबा निहाती दरकार ओके तेणु से पॉइंट ऑफ व्यू रु जदि तमे न दौच मे बी तांको देह बहुत खराब हेगी पर हमर कोन ना क्रिटिकल कंडीशन हेगी डेथ भी हो जाय पारे ओके तो तमे जदि दौच जीवन बंचेई दबो ओके किंतु देला परे दीटा कंडीशन आइदर भल भी पारे मे बी खराब भी पारे जदि रिएक्शन जदि एगेंस्ट माने ब्लड ट्रांसफ्यूजन एमिति हुए नी प्रॉपर्ली तमर कोन ना टेस्टेड हुए तमे एमति कहलो 5-6 थर हमर ब्लड बैंक रे ताकू सीरीज ऑफ टेस्ट करा जाय कला परे तुमको देखा जिवो जे एटा कंपैटिबिलिटी टू योर बॉडी को एटा कंपैटिबल होउछि ना नै से अनुसार तमर लास्ट ग्रुप ब्लड मैचिंग ट्रांसफ्यूजन किछिटा थाए हां से जो किछिटा सेति डिजीज चेकिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग ये सब जिंस थाए हाँ तो से तुम टेस्ट किट अच्छी तुम टेस्ट ब्लड टेस्ट कला पर तुम देखल जे यही जो ब्लड ग्रुप सपोज ओ पॉजिटिव कि जहाँ भी अच्छी तुम देखल जे लोक मैंने अच्छा दवाई माने रेडीमेड तो रेडीमेड जो ब्लड टा हमको मिलिबो से ओ पॉजिटिव रो डायरेक्टली एटा ट्रांसफ्यूजन हुए नि तुमको सेटा प्रॉपर सेटा से माने कोन करंती ना प्रोसेसिंग करी कि सेटा हमर करंती तेणु ब्लड ट्रांसफ्यूजन जोटा कि करा जिवो मे बी तार हार्मफुल टू द बॉडी ही पारे किंतु जदि न रिएक्शन कला बंचे भी पारे ओके तो दीटा कंडीशन हमर रहउची तो गोटे मिनिट गोटे सेकंड तो तो हमर कोन ना प्रॉब्लम हे पारे जदि सेटा तेणु आज आउ गोटे कथा होची जे तमे आज ए डॉक्टर हिसाब रे तमे जानिछ जे रूल्स रेगुलेशन कोन तमे जदि आज ए डॉक्टर हिसाब रे जे प्रॉपर एटा जानिछ जे अनएथिकल हे जिवो जदि जनकू माने ए भले टेस्ट न करी के दिया जाय तेणु मेडिकल प्रैक्टिस रो भी तमरो अगेंस्ट रे तमे जाउछ किंतु तमे ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू रु तमे जानिछ जे जनकर जीवन बंचेबा निहाती दरकार आउ तापरे भी आज ए कलेक्टर हिसाब रे यू शुड बी अबाइड बाय द रूल्स ऑफ रेगुलेशन तमे सब बळे रूल्स ऑफ रेगुलेशन को नेई की काम करिवो आज वेल एज तमे सिचुएशन एटी फेस करू जे गोटे निहाती पर्सनल इमरजेंसी केस रे तांको भी सेव करिवा निहाती दरकार आन तमे जाइछ सेठी गोटे लैंडस्लाइड त सेठी तो गोटे केस अछि ता संगे रे तमरा बहुत गुडे भी लोक माने सेठी सफरर होते से माने समस्त को भी तमे इक्वली इंपोर्टेंस दे के देखिवो ओके तो यही सबू माने एटा होची कोन डिफरेंट एंगल तापरे तमे कोन एक्शन कहलो जे नहीं इमीडिएटली कोन करिवो ब्लड कलेक्ट करिवो प्रथमे टेस्ट करी कि तमे प्रथमे सीजीए लेडी अछि तांकर कंसेंट नबो तांकर कंसेंट नबो तांकर फैमिली रो कंसेंट नबो जदि भी कारण एटा गोटे क्रिटिकल सिचुएशन एठी नियर रे किछि नाही तमे करूछ इमीडिएटली तमे ब्लड बैंक को कलेक्ट कांटेक्ट करी कि ताठो भी ब्लड आनिबो जदि फ्यूचर पडिला ओके आउ इमीडिएटली तमे कोन करिवो ना जो ट्रांसफ्यूजन कंटीन्यूअसली मॉनिटर करूतबो जदि भी किछि असुविधा हला कि रिएक्शन हला इमीडिएटली तम केंदी मेडिकल ट्रीटमेंट करा जिवो अदर
जगह को सेटा को भी तमे भाबी की रखिथिबो ओके तो एई सबु एंगल से भाबी की ये सिचुएशन रे करके रखिबो जे एई पाई मामे डिसीजन नेलु तांको घर लोकर डिसीजन नि आइछि कंटीन्यूअसली हमर जो मॉनिटर करा है ब्लड बैंक को कनेक्ट करा जाइछि सो दैट कि तमे बोथ गोटे प्रोफेशनल जेमती मेडिकल हेल्प तांको जणे देलो ह्यूमैनिटी दृष्टि तमे देखेलो सो दैट कि एमिति तांको माने सेठिके लोक जेमती न भावंतु जे एमाने थिले जीवन टाको बंचै परले तांको भी न लागू किंतु जो निया जाइछि गोटे समस्त डिसीजन रे करी के फाइनली क्रिटिकल सिचुएशन को देखि कि सही सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन को भाबी कि तुमको निया ओके तो तमे एमिति भाबी कि करि परिबो ठीक अछि सो लेट्स सी तमे कोन कोन फर्स्ट पॉइंट है हां देखि दबा में कोन कोन हेति तमे करि परिबो so in a remote एक तो पाखरे एते किछि नो remote area landside heat region so district magistrate also a trained physician कौन कौन हमरो ethical dilemma रहउछि uphold the procedural integrity or priority the moral obligation to save the life in crisis तो ethical issue होछि patient's welfare versus medical protocol so conflict between immediate need to save the life of a pregnant woman and establish medical protocol that requires blood for transfusion to be procured only through a recognized blood bank तेणु एटा गोटे रहउछि जे तमे लोकर जीवन बंचाय पई प्रेग्नेंट वुमेन जने अछंती त तांको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करिवो ना मेडिकल जो एथिक्स को फॉलो करिवो बेनिफिशियंस versus non-maleficence. The transfusion of blood could potentially save the woman life. माने जदि हमें मैचिंग करी की यूज करूचे विदाउट प्रॉपर प्रोसेसिंग करी की तो मे बी काम करी पारे एंड माने वुमेन लाइफ बंची भी पारे but using blood that has been not properly screened may be harm to the women data भी हे पारे मे बी रिएक्शन हे पारे justice versus decision making in the crisis medical team has the duty to treat all the patient fairly regardless their circumstances समस्त तो सेठी माने खंडिया खबरा हे पड़ी छंदी ओके जेहेतु एठी लैंडस्लाइड हेछि हमें कहिले जे सिचुएशन हला मेनी पीपल एंड लैंडस्लाइड अकट ला होछि ना large destruction of property and life एठी केवल हम जनकर सिचुएशन क्रिटिकल इवन बहुत लोक एथिरे भी तांकर भी कंडीशन खराब अछि तो समस्त को हम इक्वली ट्राई करिबा प्रोटेक्ट करिबा डिजास्टर केस रे सर डिजास्टर केस रे गोटे हुए जो कहलो रिकॉग्निशन ऑफ जो सीवियर पेशेंट माने सेग्रीगेशन ऑफ सीवियर पेशेंट जो मान को ताको प्रायोरिटाइज करके ताको एयर इवैक्यूएशन पे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया हुए तापरे सेकंड फील्ड मैनेजमेंट जोटा इमीडिएट करियो सेटा करनते हां माने कहूचे हमें सब सिचुएशन गुडा को हमें प्रथम हमें एई जो प्रथम क्वेश्चन रे हमें देखबा जे कोन कोन सिचुएशन हेछि तमे एबे हमें रिकमेंडेशन दउनी हमें एबे देखुचे जे कोन हेई परिबो कोन हेछि तो से तापरे फाइनली हमें कोन करबा जे कोउटा पॉजिटिव प्रति सिचुएशन पॉजिटिव कोन नेगेटिव कोन फाइनली हमें रिकमेंडेशन द ओके आगो कोन हमें देखि देबा जे सिचुएशन कोन हेई पारे कोन न हेई पारे तापरे हम देखिबा आर पॉजिटिव कोन नेगेटिव कोन फाइनली हमें रिकमेंडेशन द ओके सो हमें वर्तमान देखुचे जे कोन हमरो पॉजिटिव कोन नेगेटिव कोन रहउची ओके तो प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी तमे जने डॉक्टर आ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सेम टाइम रे तेणु जने फिजिशियन हिसाब रे डॉक्टर हिसाब रे हमर प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी रहउची जे टू एंश्योर द बेस्ट पॉसिबल केयर टू द पेशेंट किंतु डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तमे हिसाब रे जाइछे सेठी तो वन हैज बॉर्डर रिस्पांसिबल टू अपहोल्ड द लॉ एंड मेंटेन ऑर्डर and treating everyone equally समस्त को तमे इक्वली देखिबो ओके human life versus legal procedure the human life is important but the sometimes district magistrates one expected to follow the legal procedure okay तनु एई भलिया कोन होछि ना एथिकल डायलेमा हमें देखिबा जे कोन कोन हमें द्वंद्व रे हमें पढुचे ओके एई गुडा को तमरो क्वेश्चन थिला जे व्हाट आर द एथिकल इश्यू इन्वॉल्व
तेणु एथिकल इश्यू रे तमे एगुडा का लिखिबो जे एगुडा एथिकल इश्यू नेक्स्ट तम पाखरे कोन ऑप्शन अछि पचरा जे व्हाट आर द ऑप्शन फाइनली तमे कोन रेकमेंड करिवो तो तमे जदि ब्लड सपोज तमे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करूछ पॉजिटिव कोन ना इमीडिएटली जदि ट्रांसफ्यूजन करूछ आ काम कला यू कैन सेव द पेशेंट्स लाइफ इन द क्रिटिकल सिचुएशन तमरो ह्यूमैनिटी और कंपैशन अछि देखा जिवो यू हैव प्रायोरिटाइज एंड uphold the inherent value of the humanity and compassion during emergency देखा गला जे नहीं तमरो तमे प्रथमे ह्यूमैनिटी को मोर इंपोर्टेंट देला इमीडिएट एक्शन तम देखा जिवो जे लोक माने कहबे जे हां जने कलेक्टर आसला सेट ही ऑन द स्पॉट डिसीजन कला आ ऑन द स्पॉट रे हमरो जदी काम कला जे रिजॉल्व हे गला मे बी एवरीवन appreciation देबे and also have the instill faith and appreciation among the local for administration's quick decision during crisis एडा होची पॉजिटिव नेगेटिव कोन जदी ठीक रे जदी काम न कला allowing the transfusion माने it will be against the rules and regulation breaches the established rules law and regulation it may be perceived as a compromise with medical ethics especially given your background तमे जन डॉक्टर हे कि तमे जानि छ जे आगो प्रथमे प्रोसेसिंग करी कि ता यूटिलाइज करिया कथा ता जानि सुनी कि जदी तमे एटा यूटिलाइज करू छ दैट मींस यू आर गोइंग अगेंस्ट द मेडिकल प्रोफेशनल एथिक्स पोटेंशियल हेल्थ रिस्क तो तमे विदाउट डूइंग द प्रॉपर टेस्टिंग एंड द कंट्रोल इन प्लेस तमे जदी ट्रांसफ्यूजन करू छ दैट मींस यू आर पुटिंग द पेशेंट हेल्थ इन रिस्क so there is a risk of transmitting infection and complication arising from unmatched blood type suppose rochi तापर हमर कोन होची सेकंड होची follow the protocol don't जदी तमे प्रथमे कहले जे मु ट्रांसफ्यूजन करि देबी कर देले पॉजिटिव कोन नेगेटिव जदी तमे ट्रांसफ्यूजन करूनो तो प्रोटोकॉल को फॉलो करूछ ताहले कोन मेरिट हो जे तमे कोन कलो ना प्रोफेशनल इंटीग्रिटी देखिलो जे रूल्स रेगुलेशन को मानिलो एस्टैब्लिश protocols underscore the importance of procedural integrity okay and tame unauthorized transfusion kalani so you avoid potential harm that might be arise from unregulated procedure and also you are adhering to the book and potential legal repercussion and breaking the rules regulation किछि भांगिलानी जेहेतु रेगुलेशन अगेंस्ट डिमेरिट कोन ना ओडे लाइफ को तमे रिस्क रे पकई देलो काली जदी तंगर डेथ हे जिवो तमे थिला जने डॉक्टर थिला तमे करितले हेई परथना न हेई परथना तमे जदी न कलो किछि त तंक लाइफ पूरा रिस्क रे पड़ी गला एम्पैथी सो एम्पैथी कंप्रोमाइज तमे किछि ह्यूमैनिटी एंगल रो तमे देखले जे पूरा निर्दय लोक adhering strictly to protocol the human element of the empathy and immediate care would be perceived that compromise hela local लोक भी तमे कहबे नाही किछि माने जने डॉक्टर थिले कलेक्टर थिले डिसीजन नै पारि थाने किछ करलेनी सो लोकल पॉपुलेशन may perceive the administration as bureaucratic and uncaring during the critical emergency तो आउ कोन ना दसा तमे कोन ट्रांसफर टू ए रिकॉग्नाइज्ड ब्लड बैंक तमे कोन करथान तो ना transferring to a recognized facility ensuring all the action taken care within established guideline structure amaro medical care so recognized blood bank have proper infrastructure expertise ensure transfusion is safe and adequate monitor legal protection so following the established procedure you are shielding both yourself and the medical team from potential legal repercussion public trust adhering to the standard can help maintaining and bolstering the public trust तो किंतु एटा करू छ तमे ओटे रिमोट एरिया रे वर्तमान पड़ी छ जोठी कि ब्लड बैंक नाही तो सेठी कि जिबा पई बहुत अर्जेंट सिचुएशन रे सेठी कि जिबा बेलगु तांको कंडीशन खराब हेतिबो गिविंग इमरजेंसी देयर मे बी अनफोर्सिन डिले इन रीचिंग द रिकॉग्नाइज्ड फैसिलिटीज द पेशेंट लाइफ को डेंजर रे पकोछ ओके तो एई भले सिचुएशन हमर कोन होची ना तमरो रहउची तो फाइनली तमे कोन एथिरे एक्शन नबो आज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हिसाब रे तमे कोन एथिरे एक्शन नउछ ओके तो प्रथमे एटा फाइनल तमर रिकमेंडेशन कोन ना इफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिसाइडेड टू अलाउ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू बी प्रोसीड ही शुड एंश्योर दैट द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन प्रथमे ला इन्फॉर्म कंसेंट तो प्रथमे सबु inform the women about the potential risk and benefit of the blood transfusion जे तांकु हो जे ते रिस्क भी अछि आउ लाइफ भी बंची जिवो तो तांकर प्रथमे कंसेंट नियो
ensure तमे करो जे ensure she provides her explicit consent for the procedure. तापरे communicate the situation and obtain the consent from her family as well. तो तांगा family ठू भी हमरा consent नहीं जाओ. तापरे blood testing. So utilize the available blood group test kit and check the blood for infectious disease and ensure its compatibility. The proper blood test करो. सर गोटे मिनट तापरे initiate हाँ कुआ सर एठी जो कंसेंट नबा कटा कहउछंती आको क्लियरली मेंशन करू कि कंसेंट टू बी टेकन रिटन माने रिटन थ्रू रे नबा पई रिटन कंसेंट टू बी टेकन एंड से जो जिंस जो फील्ड रे गोटा अवॉइड होय तो जिंस मेंशन करू कि क्लियरली मे भी तांको हस्बैंड करो सेठी तमे कुह वॉइस रिकॉर्ड करके रखी थाओ जदि से ओराली देले जे हमें एबळिया करिउ से कहले हां करंतु बोली वॉइस रिकॉर्ड करके रखी थाओ नहीं सर एक्चुअली मेडिकल प्रोफेशन रे जो ये थाए मूवी गुड मेडिकल प्रोफेशन तो सेतरे ट्राइज करा जाए ये सब सिचुएशन देखा जाए नि फिर भी जेते बेले निया जाए रिटन कंसेंट निया जाए सब जिंस रे किछि भी जदि मेडिकल एथिक्स रो बियॉन्ड रे जाकी करूछंती तो रिटन कंसेंट धरा सी वर्तमान सिचुएशन है नाहती राइट कर जो रिटर्न करिया पे ओके तो सेठी कोन करबो जनरली हम रिलेटिव लिखंती ये जो सेठी पय त रिलेटिंग पर नियो as well as तांकर भी कंसेंट नियो जदी सी इज इन अ पोजीशन टू राइट गोटे सिग्नेचर करिया पे किछ करिवा नै पूरा कंसेंट लेखाइ तां कहि दबो जे या फॉर्मेट लेखाइ तमे कोन कहउछ जदी चाहउछ सिग्नेचर करो तो सिग्नेचर तांका कंसेंट नबो ओके सर सेटा पेशेंट को इंटिमेट करा जाए एई सब जिंस रिस्क अछि हां तापरे से तांगोड खाली केवल सिग्नेचर निया जाए ठीक अछि ठीक है सिग्नेचर खाली ही तो सिग्नेचर निया जाओ थोड़ी ऊपर से लेटर लिखि देबे ओनली तांका सिग्नेचर निया जाए कंसेंट फॉर्म तापरे हमरा कोन ना तमे इनिशिएट करबो ट्रांसफ्यूजन and arrange the additional resource so start the blood transfusion process using available resource jaha bhi achi tame blood transfusion start karo and concurrently coordinate with nearly blood bank to arrange the additional blood jodi necessary achi monitor karo closely monitor karo the woman's health so closely monitor the woman throughout the transfusion any sign of adverse reaction hochi ki ensure jodi kichi hochi ensure immediate medical intervention if required डॉक्यूमेंट करो सब जो प्रोसेस टा को तमे करलो पूरा टोटल डॉक्यूमेंट करो द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शुड कॉम्प्रिहेंसिवली डॉक्यूमेंट द हिज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस द मेजर टेकन टू गारंटी द सेफ ऑफ द सेफ्टी ट्रांसफ्यूजन ए सब गुडा सो दैट कि डॉक्यूमेंटेशन जदी करिच वाइटल रिकॉर्ड रछि सो दैट कोनोसी पर जदी लीगल प्रोसीजर नउच तमे पूरा कहि परबे जे बडा सिचुएशन थिला हम ता कंसेंट नै थिलु तांका घर कंसेंट नै थिलु हमें प्रॉपर मेडिकल टीम रखी की ए सब गुडा कामे करिथिलु so this documentation will serve as a vital record and offer protection from potential legal liabilities in case of any unforeseen complication so ultimately what a district magistrate hisab re you should prioritize the patient life and well-being also while consider the legal and ethical implication of the decision तेणु तमे जले करूछ ए सबु एंगल रु तांग जीवन को बंचेया पई ता रूल्स रेगुलेशन अनुसार कंसेंट नेलो घर लोकंकर कंसेंट नेलो प्रॉपर केमदी आज डॉक्टर हिसाब रे केमदी प्रॉपर ट्रांसफ्यूजन करा जिवो टेस्टिंग कलो टेस्टिंग करी कि तमे प्रॉपर मॉनिटर कलो जदी भी किछि होची इमीडिएट ता भी प्लान करूछ जे हमें नियर बाय ए को करबा तेणु आ एवरीथिंग प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड करूछ जे ए सिचुएशन रे डिसीजन ता निया सर आ गोटे जिंस सर एथरे डेलीगेटेड पावर विषय किछ लिखाय नै मतलब कि गोटे डिजास्टर सिचुएशन रे डीएम जाय कि सेठी एते सब एक्शन जो गोटे गोटे केस रे केस टू केस बेसिस एते करि पारेनी तो ये केस रे नॉर्मली से डेलीगेट कर दियंती जे भी मेडिकल टीम थांती से परमिशन देला पर से काम गुडा को तांको डेलीगेट कर दियंती अन्य जो मेडिकल टीम जा भी तो से जिन सब से किछ लिखा है नहीं तो आमे सेतरे किछ लिखिबो कि नॉर्मल कर नै नै सुनो नॉर्मल त करा जाय नै सेमिति एते केस जने कलेक्टर केबे बसी कि जनक पे एते करबोनी किंतु तमे जने तमरो थिंकिंग कोन कुहा जाउची जे तमे कोन करबो एटा हमें हमको हमर सेठी प्रैक्टिकल कथा कुहा जाउनी जोडा कि हमें आइडियल कोन करा जिवो सेटा हमको तम थिंकिंग को चेक करा जाउची ते एग्जाम रे प्रैक्टिकल तो माने सेही पर्यंत हमर कोन होची ना सिचुएशन रे जनरली कहि देबे कि हां करो कोन करो से तो पूरा एते टाइम देखि करबेनी अन्य लोक को देखिबार थिबो कि कोन ओके किंतु प्रैक्टिकल कोन करबा कथा मोड आइडियल सिचुएशन ले ओके ठीक अछि सब बुझी पेला आ किछि डाउट अछि थिले
सर जदि रूरल एरिया रे थिबो कोन तांको शिफ्ट करि दबा माने किछि अलगा पेशेंट मानको नहीं से तुम देख गोटे केस है तुम आंबुलांस नहीं जाइए से केस रे तुम केस माने कौन कर ना आम कहले ना आम इमिडिएटली माने गोटे ब्लड बैंक को भी कांटेक्ट करूचे सो दैट कि से पर्यंत जो पर्यंत न आसिक पहुंचती से पर्यंत आम सिचुएशन को हैंडल करते सर सर जेहेतु माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अछंती तो बिग इश्यू गोटे हे लैंडस्लाइड तो सबू डिपार्टमेंट रो सबू डॉक्टर माननको सबू माने जहा जहा दरकार सबू नै कि से जाइछंती सेही माने सेही विक्टिम माननको पाखकू तो सेठी सबू माने जहांकर इमिडिएट दरकार तांको से माने करिवे तो सेही जिनसटा भी मेंशन करबा दरकार कि से जो प्रेग्नेंट वुमेन का केस को सॉल्व करिया भितर अन्य मानकर जदी किछि प्रॉब्लम हला ताकू से माने भी मैनेज करि परिबे सेटा एक्चुअली है ट्रायज बेसिस रे हुए माने डिजास्टर केस है डिजास्टर ही सेटा जोटरे कि तम सोर्सेस जो रिसोर्सेस सफिशिएंट नो ताकू डिजास्टर कहंती आ प्लस द्वितीय कथा रहला से केस रे ये भी मैनेज डिजास्टर मैनेजमेंट टाइप रो ना कोन हां तापरे जो कहले ट्रायज बेसिस रे डिसाइड हुए कि ओके सो ठीक अछि हमकु एते नहीं तमे देखो सब एंगल हमें कहले जहा ठीक लागुची परीक्षा लिखि दबो ओके एते आमे पूरा सब जिंस को तमरा परीक्षा हॉल रे एते जिंस मने ही पड़िबे फास्ट कथा होची तुमको से सिचुएशन बुझिला तुमको जहा ठीक लिखुछ लिखिबो कारण जे भी माने आमे गोटे माने सब एंगल रो ए जो धरा तमरा माने एठी बसी आमे डिस्कशन करचली डिफरेंट एंगल परीक्षा हॉल रे 10 मिनिट भीतर एते कथा मने ही पड़िबे ओके सर सेटा हमें फोकस करबा कि से जो लेडीटा इश्यूटा केमते सॉल्व हबो हमें अलगा ओडा को माने 10% देबन लेडी रो इश्यूटा सॉल्व करिया को 90% दबा तो ता ऊपर ही हमें फोकस करके लिखि माने सेटा होची फाइनली तमरो स्टेप्स ओके तमे दबा एमिति करिवो जे केवल माने जो केवल माने कोन होची ना से सिचुएशन को हैंडल करिया पे कोन करबो आ डिसीजन इमीडिएटली क्विकली नबो जे कोन करिवार अछि ओके भाई क्वेश्चन ना पचारि से सेठी कोन सिचुएशन सही सिचुएशन ना केमिति सिचुएशन एमिति तो बहुत गुडे केस थिबो जो मानकर खंडिया खबर है कि एमिति भी माने क्रिटिकल कंडीशन तांको पय भी भाबियर अछि ना ओके ठीक अछि सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एटा लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिवा एटा भी हमें ऑलरेडी मॉक टेस्ट डिस्कस जो पढ़ी थिला हमर आई थिंक मॉक टेस्ट 12 रो थिला ओके mock test 12 रा थिला so at 9 pm on Saturday evening Rasika a joint secretary was still engrossed in work in her office her husband Vikram is an executive in an MNC and frequently out of town in connection of his work MNC रे सबले बाहरे ड्यूटी पड़ुची त बाहर पळौ छनी so their two children is 5 and 3 are looked after by the domestic helper जने जे तांकर घरे काम करछन सी तांकर दि जण पिलांकर देखा रेखा करछन ओके सो around now 9:30 pm her supervisor came so Mr. Suresh call her and asked her to prepare us in a meeting in the ministry तो minister ଗୋଟେ meeting ପାଇଁ what a detailed report amra banaibar achi and she realized that she will have to work on Sunday to finish the additional work task given by her superior तो तंगा superior जो काम देई छथि जदि सेही भले हमें सेटा को रिपोर्ट करिया पड़ियो संडे भी आसी काम करिया पड़ियो and she had kept the welfare of the people utmost in discharging her duties she feels that she has not done enough justice to her family and she has duties in discharging to mute karo okay she has not done enough तो देखो राती 9टा हलानी 9:30 रे तांगा सुपरियर आसी कहउछन जे ए कामटा हमर निहाती हेबा दरकार ए रिपोर्टटा करिया कोले से संडे भी आसी काम करिया को पड़िबो तांकर ट्रैक रेकॉर्ड अछि जे सब बेले से मोर फोकस करंती पब्लिक लोक मानकर वेलफेयर पब्लिक वेलफेयर पई एंड किंतु सब बेले देखो जे तमे संडे दि आसी काम करियो फैमिली को केतल टाइम शी फील्स दैट शी हैज नॉट डन इनफ जस्टिस टू हर फैमिली
and she has not fulfilled her duty in discharging essential social obligation. Aguru emiti bi even in as recently as last month she had to leave her sick child in nanny's care as she had to work in the office. जे तांकर माने चाइल्ड कर देह खराब थिला से घरे छाड़ी के ऑफिस रे भी काम करछन. Now she feels that she must draw a line beyond which her personal life should take precedence over her professional responsibility. जे आगो निहाती घर को मोर फोकस माने प्रायोरिटीज दिया जीवो कारण गोटे लिमिट अछि लिमिट रो बाहर जाई कि से माने तांकर पर्सनल लाइफ और फैमिली को पछरे पकई की ऑफिस रो काम आगो करिवेनी. She thinks that there should be reasonable limit to the work ethics as punctuality, hard work, dedication to duty and selfless service. So discuss the ethical issue involved in the case and briefly describe at least 4 laws जोटा कि हमारा गवर्नमेंट आनी with respect to providing a healthy, safe, equitable working environment for women. Imagine you are in a similar situation. So what suggestion would you make to mitigate such working condition? Okay, बुझिबाला कथा कौन होची ओ ऑलरेडी एटा डिस्कस हेची एटा में ऑलरेडी डिस्कशन करिथिले ना कोन नथिले करथिले जदी करिवानी हो. अच्छा हम करिचे जदी खाली हमें शॉर्टली कर दबो छे. ओके देखो हाँ ठीक अछि जे प्रथम कथा होची जे कोन हमें एथिरे कोन कोन तमर रहउची हमें देखु जे कोन कोन मेजर इशू वर्क लाइफ बैलेंस इक्विलिब्रियम जे balancing the professional obligation with personal commitment and well-being. तो ता भितरे हम जदी प्रोफेशनल को मोर फोकस करू जे हमर पर्सनल लाइफ फेल होची और पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज होची. तापर वर्क कल्चर और जेंडर सेंसिटिविटी प्रमोटिंग ए कल्चर दैट रेस्पेक्ट पर्सनल बाउंड्रीज and value inclusive for all employee. Shared family responsibility केवल माने पिलांकर केयरिंग करबा रो दायित्व केवल मां कर नै फादर जदी बोलिबे माने डिफरेंट रेस्पोंसिबिलिटी तांकर भी तो रेस्पोंसिबिलिटी रहबा दरकार. ओके न नाही आ जदी सब काम फादर करिवे ओके सॉरी मदर करिवे त फादर कोन करिवे. सो एनकरेजिंग ऑल फैमिली मेंबर्स समस्त मिसी की इक्वली दे शुड बी पार्टिसिपेट इन द हाउसहोल्ड एंड फैमिली ड्यूटीज so that ensuring collective well-being. तेणु शेयर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहबा दरकार. रैशनल वर्क प्रोटोकॉल एमिति नाही कि तमे माने कंसीडरिंग बोथ आवर्स एंड नेचर ऑफ द टैक्स अवॉइड अननेसेसरी लास्ट मिनिट तमे कहबो काली काम अछि राति 12 रे कहबो जे ओते कामडा करि के दियो तो लास्ट मिनिट डिमांड ए भले हम अवॉइड करिया दरकार. एन्श्योरिंग ह्यूमन वर्किंग कंडीशन जणे केमदी करिवो जे तार प्रॉब्लम थिबो कोन थिबो त लास्ट मोमेंट रे डिमांड करिवो. एन्श्योरिंग ह्यूमन वर्किंग कंडीशन दैट कंसीडर बोथ आवर्स एंड नेचर ऑफ द टास्क अवॉइडिंग नेसेसरी लास्ट मिनिट डिमांड. पर्सनल हेल्थ एंड वेलबीइंग प्रायोरिटाइज द पॉलिसी दैट आर अलाउड पर्सनल हेल्थ needs without personal backlash. तापरे एम्प्लॉय ऑटोनॉमी ऑफ वॉइस एमिति नाही कि बॉस त कहि देले बॉस सुनिबा को नाराज. ओके काहर कोन असुविधा अछि आ हमें डरी की कहूनी कारण बॉस को खुशी करिवार अछि नहले प्रमोशन हबनी कि हमें गोटे इंप्रेशन खराब हबो ए भले भी माइंडसेट रहउछि सबले. तो एम्पावरिंग एम्प्लॉय टू कम्युनिकेट बाउंड्रीज एंड कंसर्न से खोली कि कहि परला भले सिचुएशन तमे क्रिएट करिवो जे नाही मोरो काली देह माने मोर चाइल्ड कर देह खराब अछि मु आसी परिबेनी कि मते आउ किसी दिन समय दिया जो. सो टू वे कम्युनिकेशन हमरा को तमे केमति स्ट्रेंथन करबो तापरे. सो एम्प्लॉय ऑटोनॉमी ऑफ वॉइस हमरा रहबो दरकार. तो दीज आर द एथिकल इशू वर्क लाइफ बैलेंस और शेयर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी रैशनल वर्क प्रोटोकॉल रहबो दरकार पर्सनल हेल्थ वेलबीइंग आउ एम्प्लॉय ऑटोनॉमी ऑफ वॉइस. सेकेंड क्वेश्चन पचारिथिला जे गवर्नमेंट कोन एमती स्कीम नै के अछि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 जोथिरे कि हमर 12 रु 26 वीक जाए हमर पेड मैटरनिटी लीव दिया जाउची. इवन तुम घर रहबो तुमको फुल सैलरी मिलिबो. वर्क फ्रॉम होम ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट दिया जाउची. क्रेज फैसिलिटीज इट इज मैंडेटरी फॉर द माने कॉर्पोरेशन जोठी 10 रु प्लस एम्प्लॉय रहउछंती सॉरी 50 रु प्लस एम्प्लॉय रहउछंती तमे तांको पई क्रेज फैसिलिटीज माने सेठी गोटे
चाइल्ड केयर फैसिलिटीज तमे प्रोवाइड करिवो सो दैट से माने काम करिया को आसीबे एडी चाइल्ड को रखिबे मझिरे मझिरे देखि देखा करिकि भी आस परथबे दिन रे 2-3 थर एटा भी हमर गवर्नमेंट रो फैसिलिटीज अछि इवन इफ हमर वुमेन अलाउड इन नाइट शिफ्ट फॉर प्रॉपर सेफ्टी मेजर तो एटा गोटे हमर मैटरनल बेनिफिट एक्ट सेकंड हला हमर पोसो एक्ट हमर 2013 जो थिरे सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्कप्लेस जदि सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्कप्लेस होउची तो ताकू एड्रेस करिया पे रिड्रेस करिया पे प्रॉपर मेकानिज्म आउ एटा पई गोटे इंटरनल कमिटी तमे जानिछ 10 जण मेंबर को नै गोटे इंटरनल कमिटी से माने माने विथ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंक्वायरी करिवे आउ इंक्वायरी करके हमरा रिपोर्ट देबे एंड कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड विद इन 3 to 6 months of the incident आउ इमीडिएटली इश्यू रिजोल्यूशन कैन through conciliation or the committee initiated inquiry तापरे मिनिमम को जो वेज एक्ट अछि कोड ऑन द वेज एक्ट तो ऑब्जेक्टिव होछि जे इक्वल रेम्युनरेशन 1976 टू एंश्योर नो जेंडर बेस जे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इवन इफ डीपीएसपी रे मेंशन अछि आर्टिकल 39 जो थिरे कि नो वेज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द जेंडर और सिमिलर नेचर ऑफ द वर्क नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट इवन इफ नै हमें कहबा फीमेल बोली हमें नबानी कारण आगु को मे बी एमान को जदि रिक्रूटमेंट करबा ओके तो अधिक छुट्टी दबा पड़िबो ड्यूरिंग मैटरनल बेनिफिट पई तो सेति पई हमरा कोन डिस्करेज कर दियंती कि नै अधिक वुमेन मान को नबानी किंतु एई भलिया डिस्क्रिमिनेशन हमर हबा न हबा दरकार फैक्ट्रीज एक्ट हमर आसी जो थ्री कि ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर ऑफ द वर्कर इंक्लूडिंग वुमेन इन द फैक्ट्री ए सब प्रोविजन हमर अछि तो केमिति हमर ए कंडीशन को हमर मिटिगेट केमिति करा जिवो सजेशन टू मिटिगेट सजेशन तमे एक तो मेंटल प्रिपेयर्ड रहइबो सिविल सर्वेंट बाउंड टू फेस चैलेंजिंग सिचुएशन डिमांडिंग unwavering dedication to the public service so crucial to remain mentally poised and prepared eta rahibo tapre rehabilitation is a motivation one will encounter dilemma that test their dedication to the commitment periodic introspection of and resumption of our core motivation for the public service tapre learn on the lean on the family support the family plays a जो private role especially during the time of distress family ही हमको help करिवे ओके सो सेति पई सेमानंकु हमरो निहाती इमोशनल और मोरल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली मेंबर can be instrumental in fulfilling our commitment to the public service while ensuring personal well-being share responsibility समस्त मिसी की टेक केयर करिबा हमर चाइल्ड हियरिंग को केवल जे मदन करो सब रेस्पोंसिबिलिटी जो फादर जदि बुलिबे हबनी समस्त कर इक्वल रेस्पोंसिबिलिटी रहबा दरकार जदि आजि गोटे माने क्रिटिकल वर्क पड़ी छि से केस रे फादर तंगर काम को कहीं बंद करी कि किछि माने टेक केयर कहीं करिवे सो एक्ट ऑफ चाइल्ड रियरिंग इज ए जस्ट फॉर डिमांडिंग सो इट शुड नॉट फॉल अपॉन वन पेरेंट ओनली मदर को ऊपर केवल न सो शेयर रेस्पोंसिबिलिटी द पार्टनर as in case of Rasika the Vikram not just about equality but about collective and ensuring balanced family life and mutual participation in the delights of parenting तो तमे कौन recommendation of the for employer तो rationalize the work hours गोटे रिजनेबल वर्क आवर रहइबो तमे एबे देखिबो वर्क से 30 रे तमे कॉर्पोरेट रे 9 घंटा रु अधिक काम करै परिबनी वीकली हमर कोन होची 45 घंटा रु अधिक काम करै परिबनी एई भले हमर निहाती वर्किंग आवर्स रहे छै टाइम फॉर लीजर encourage the employee to take break and allocate leisure time to maintain their mental health and productivity and female employee support recognize the unique challenge faced by the female employees offering support such as creche facilities kariba can make a vast difference in their work life balance अब बहुत गुडे कॉर्पोरेट रे तमरा creche facilities भी रहुची जोठी they can bring their child to the creche so ऑफिस रे काम कले पाखरे तांकर चाइल्ड creche रे रहिले मझिरे जाई कि से माने देखि के आसी परिबे प्रॉपर से मानकर केयर ने कि आसी परिबे सो तमरा भी मेंटली पीस रहइबो मु काम भी करि परिबे तम भाबिलो जे मोरो माने चाइल्ड और मोरो पिला माने कोन ना सेफ हाउ सिक्योर अछि तो एई सब फैसिलिटीज तमे करि परिबो ओके ठीक अछि तो एटा हमर थिला कोन ना हमर थर्ड जोडा मॉक टेस्ट 12 रे एटा में थिला ओके
तो आम 3टा डिस्कशन कले एंड एटा डिस्कशन करथिले मॉक टेस्ट रो 7 डिस्कशन करथिले जनरल डायरेक्ट पब्लिक डिपार्टमेंट एटा डिस्कशन करथिले एटा डिस्कशन कले सो वन एटा गोटे अच्छी आम जोटा कि नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिवा ओके गाइस सो विल डिस्कस द रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास आउ कार कोन किछि डाउट अछि